In a big relief to the Sachin pilot camp, the Supreme Court today has upheld the Rajasthan High Court's order and allowed it to go ahead and pass the verdict tomorrow in the political crisis case that is being heard by the court currently. Now, the Supreme Court has said that it is still going to continue hearing the Speaker's appeal in the top court. Now, what does this exactly mean? How does the Supreme Court order benefit the Sachin Pilot camp or the Ashok Gehlot camp? And whose favor does it work in? That is what we are going to discuss in this live, and I'm being joined by the Quint's Associate Editor for Politics, Aditya Menon, and Associate Editor Legal, वकाशा सचदेव. Now my first question goes to you, वकाशा, कि क्या होने वाला है इस वर्डिक्ट के बाद, और हमें संक्षिप्त में समझाएं कि इस वर्डिक्ट का मतलब क्या है. क्योंकि एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राजस्थान हाई कोर्ट अपना स्केड्यूल्ड वर्डिक्ट जो फ्राइडे यानी कल के लिए है वो दे सकता है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि द राजस्थान हाई कोर्ट वर्डिक्ट इज सब्जेक्ट टू बी scrutinized by the Supreme Court in the weekly hearing that it is going to begin on the 27th of July. So what exactly is that one major point here which you think is going to benefit either of the camps? So from the legal point of view, what you have to understand is the background here, right? Is that what is it that Sachin Pilot is asking for in the Rajasthan High Court? In the Rajasthan High Court, he's gone and said these notices sent to him and the other 18 MLAs with him, which have said that because you didn't attend party meetings, because you didn't, follow the instructions given to you, we are considering why should you not be disqualified from the Congress party and then disqualified as MLAs? Now, those are the key. That's what Sachin Pilot wants stopped, because once that comes into play, it affects that, obviously it pulls them out of the assembly. That's not something which he wants to do, because it also, in fact, keeps the Ashok Gehlot government in power. Now, he's obviously trying to make sure that this high court, he wants this high court to say, look, these disqualification notices are wrong and there is no cause to pull you out of the assembly. So that's what he's trying to get done there. Now, the problem is that the second issue is what the Rajasthan speaker took to the Supreme Court, which is, okay, fine, if you later want to challenge my order, if I've disqualified you, please go ahead to the court and do it. But you cannot go at this stage when I haven't even passed an order and then ask for this to be stopped. Now, the Supreme Court was supposed to basically just look at this one issue and say, okay, can the High Court be looking at this issue at all, what Sachin Pilot has asked for, before the speakers made a decision on disqualification? And what because the High Court is saying they're going to pass an order tomorrow. Now, if they tomorrow say that, look, the disqualification notices were wrong, now that's a setback for the Gehlot camp, right? It's a benefit for the Sachin Pilot camp. Now, what the Supreme Court was only supposed to be looking at is this question of jurisdiction. But they say because it involves issues of democracy, there's fundamental questions which it has to answer. Therefore, it needs to keep hearing this question, because what the pilot camp MLA says that they've only exercised their right to dissent. They've only exercised their right to free speech, which they have in a democracy. They're not doing any anti-party activities as such. So there is a democracy issue here, but the court actually should not have been looking at that issue at this point, the Supreme Court. But now what's happened is they're trying to reach a compromise in the Supreme Court. They're saying, yes, what the speaker is saying is right, that there is an issue of jurisdiction here. We will look into that issue. But in the meanwhile, they're sort of allowing the High Court to proceed, which is a bit of a strange, so it doesn't make a lot of legal sense at this point, actually, because if the High Court's going to pass its order and would then be, say, appealed in the Supreme Court, then it wouldn't matter any which way, right? So the fact that you've got these parallel proceedings now doesn't make a lot of sense. The only person who really looks like they're benefiting out of this is Sachin Pilot, because in the meanwhile, the decision on disqualification is just not going to happen. तो दर्शकों को अगर संक्षिप्त में समझाएं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वर्डिक्ट कल राजस्थान हाई कोर्ट इस मामले में देगा, वो वर्डिक्ट भी स्क्रूटिनाइज किया जा सकता है जो स्पीकर की पिटीशन फाइल की गई है अपेक्स कोर्ट में अगले हफ्ते के लिए, और वो हियरिंग 27 जुलाई से शुरू होने वाली है. लेकिन अब इसका राजनीतिक फायदा किसको होगा? क्योंकि सचिन पायलट के कैंप के लिए देखें तो कल का दिन एक बहुत बड़ा साबित हो सकता है, जहां राजस्थान हाई कोर्ट उनके फेवर में शायद वर्डिक्ट दे दे या ना दे, लेकिन कल के वर्डिक्ट के इररिस्पेक्टिव
सोमवार से जो स्पीकर के पेटिशन के खिलाफ हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में, जहां स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राजस्थान हाईकोर्ट को स्पीकर को डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस पे ऑर्डर देने का कोई हक नहीं बनता है। अब ऐसे में चलते जो एक मामला कल राजस्थान हाईकोर्ट में उम्मीद थी कि सुलझ जाएगा, वो शायद कल होता हुआ ना दिखाई दे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के फेवर में अगले हफ्ते हियरिंग्स के बाद रूल करती है तो दैट विल बी डिसएडवांटेज सचिन पायलट कैंप. So politically, how is it going to benefit, and how is the further 3 or 4 days that the Sachin pilot camp is getting before the Supreme Court hearing starts on Monday? How is that going to work? Aditya, हम आपसे जानना चाहेंगे किसके लिए होगा इस बात का फायदा, क्योंकि एक तरफ जहां राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट का पर्दा भारी लग रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की अपील जो गहलोत सरकार की तरफ से गई है वो सुनना अभी बाकी है। तो वक्त दोनों के पास आ चुका है, और कल के दिन के बाद भी किस तरह से आप देखते हैं इसको राजनीतिक तरीके से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर आज एक सबसे बड़ी चीज करी है तो वो ये है, उसने सचिन पायलट को कम से कम 4 और दिन दे दिए हैं। 4 और दिन सचिन पायलट के लिए काफी जरूरी हैं। 4 और दिन अशोक गहलोत के लिए एक और बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि इन दिनों में अब सचिन पायलट को कोशिश करनी होगी कि कांग्रेस के अंदर ही अपना वर्चस्व और बढ़ाएं, अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ाएं। अब तक ये हुआ है कि सचिन पायलट ने जहां 30 से ऊपर विधायकों का दावा किया था कि 30 से अधिक विधायक उनके साथ हैं, लेकिन ले देकर कुछ 18-19 विधायक ही हैं जो सचिन पायलट का साथ देने विधायक, सचिन पायलट को मिलाकर 19 विधायक अभी तक ये आंकड़ा सामने आ रहा है। लेकिन अब 4 और दिन में अगर मान लीजिए इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के का फायदा उठाकर सचिन पायलट और विधायकों को ये भरोसा दिला दें कि मैं आपको डिस्क्वालिफिकेशन से बचा लूंगा, या आपके तरफ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, आप जो भी आपकी राय है गहलोत के खिलाफ या गहलोत के काम करने के तरीके के खिलाफ आप खुलकर रख सकते हैं। ये एक लोकतंत्र में ये आपका हक है, यही सचिन पायलट का पक्ष है। तो अगर ये पक्ष रखकर ये और विधायकों को अपनी तरफ ला सकते हैं तो ये सचिन पायलट के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा, और उनको ये करने के लिए और कुछ दिन मिल गए हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत जो अब तक अपने नंबर्स बचा के रखे हैं, उन्होंने 100 से ज्यादा एमएलए उनके तरफ हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय ट्राइबल पार्टी के जो 2 एमएलए एब्सटेन करने वाले थे, अब फिर से वो गहलोत के पक्ष में आ गए हैं। तो धीरे धीरे करके अशोक गहलोत ने अपने नंबर्स बढ़ाए हैं इस क्राइसिस में। तो अब लेकिन गहलोत के लिए चैलेंज ये होता है कि अगर मान लीजिए कोर्ट के फैसले के बाद विधायकों को खुली छूट मिल जाती है गहलोत के साथ बार्गेनिंग करने की या गहलोत को क्रिटिसाइज करने की, तब अब गहलोत का चैलेंज ये होगा कि उनको किस तरह अपनी तरफ रखा जाए और पायलट की तरफ जाने से रोका जाए। तो अगले 4-5 दिन सचिन पायलट के लिए और गहलोत के लिए, दोनों के लिए बहुत बहुत जरूरी होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद गहलोत और पायलट दोनों कैंप्स के लिए अगले 4-5 दिन बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि कल की जो वर्डिक्ट होगी राजस्थान हाईकोर्ट में वो किसके फेवर में होगी ये देखना बनता है। उसकी स्टैंडिंग सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते स्पीकर की अपील के खिलाफ कितनी होगी ये देखना बनता है। पर आज की हियरिंग की अगर हम बात करें वकाशा, तो कपिल सिब्बल जी पूरी जी जान लगाकर गहलोत सरकार की तरफ से केस आज लड़ रहे थे। हम सबने कमेंट्स देखे हैं, उन कमेंट्स के मुताबिक किन बेसिस पर ये वर्डिक्ट पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट का आज, क्योंकि कपिल सिब्बल की जहां तक हम माने और जहां तक उनके आर्गुमेंट्स हम सुप्रीम कोर्ट में देखें, उनका ये कहना था कि ये स्पीकर का एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार होता है, एक संवैधानिक अधिकार होता है, जहां वो डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस सरकार को खतरा दिखने पर रिबेल एमएलएस को दे सकते हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट या राजस्थान हाईकोर्ट की इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। तो उसके चलते हुए किस तरह से आप इन आर्गुमेंट्स को देखते हैं? क्या कपिल सिब्बल की आर्गुमेंट्स कितने हद तक एक वैलिडिटी होल्ड करती है अगर इसको सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के हिसाब से स्क्रूटनाइज किया जाए? तो यहाँ पे क्योंकि ये डिस्क्वालिफिकेशन की इशू है, ये 10th शेड्यूल में जो हम एंटी डिफेक्शन लॉ को बोलते हैं, वो 10th शेड्यूल संविधान के उसमें है।
अब वो 10th शेड्यूल में एक पैराग्राफ है जिसमें एक लिखा हुआ है कि जो स्पीकर का डिसीजन है वो फाइनल होता है। अब 1990 के पहले इसको ऐसे माना जाता था कि स्पीकर का डिसीजन फाइनल है तो कोर्ट कभी भी इसको नहीं देख सकता है। फिर 1991 में एक जजमेंट था केहोटो हॉलोहॉर्न वाला। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के एक संविधान बेंच ने बोला था कि देखो यहाँ पे जब स्पीकर डिसीजन ले रहा है उस टाइम पे कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई जाके ये नहीं बोल सकता कि अच्छा ऐसे करो वैसे करो, कोर्ट भी जाके उस टाइम नहीं कर सकते। पर जब स्पीकर ने डिसीजन लिया है उसके बाद फिर कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम सिबल के जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको देखें, वो पूरे वो अपने आर्ग्यूमेंट्स के होटो हॉलोहॉर्न वाले जजमेंट के बेस पे कर रहा है। वो कह रहा है कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद बोला है कि स्पीकर के पास डिस्क्रेशन होता है, वो खुद डिसाइड कर सकता है, उसके पास पूरी आजादी होता है कि वो डिसाइड करे कि मैं डिस्क्वालिफिकेशन करूं ना करूं, वो पूरा डिस्क्रेशन उनके पास है। पर अगर उसके बाद अगर उसने डिसीजन ले लिया, डिस्क्वालीफाई कर लिया, उसके बाद फिर जाके बोलो कि देखो उन्होंने चांस नहीं दिया लोगों को अपने आप को डिफेंड करने के लिए, उन्होंने ठीक से प्रोसीजर नहीं फॉलो किया था, उन्होंने कुछ गलत एविडेंस को लेकर उन्होंने डिसीजन लिया, ये सब चीजें देखकर फिर कोर्ट बोल सकता है कि अच्छा ठीक है स्पीकर के डिसीजन है ये गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सॉर्ट ऑफ माना है क्योंकि उन्होंने भी अग्री किया कि अगले हफ्ते जो हियरिंग्स होंगे उसमें मेन इश्यू यही होगा कि क्या जब स्पीकर डिसीजन ले रहा है उस टाइम पे हाईकोर्ट क्या ऐसे चीज इस इशू को देख सकते हैं, वो बोल सकते हैं अच्छा इतने दिन के लिए मत देखो, डिसीजन मत करो, उसके बाद ही कर लेना। जैसे हाईकोर्ट ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम 24 को जजमेंट दे रहे हैं, तब तक डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस पे कुछ मत करो, उसके बाद ही आप डिसाइड कर लो। नाउ द इशू इज कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो एक्सेप्टेड कि नेक्स्ट वीक दिस इज द इशू टू लुक एट, कैन द हाई कोर्ट मेक दिस ऑर्डर? But what seems to have played a big role in the Supreme Court's mind is this question of democracy and who can you actually tell an MLA that you are facing disqualification because you didn't attend the meeting. अब सिबल ने आज कोर्ट में एक पुराना प्रेसिडेंट दिखाया था, केस नहीं पर एक पुराने असेंबली में, आई थिंक 2006 में उसने बोला था कि एक स्टेट असेंबली में क्योंकि लोग ने मीटिंग्स अटेंड नहीं किए थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब यहाँ पे the thing is the concept of disqualification under the anti-defection law is quite broad. Whereas one set which says that when you don't vote in the assembly as per your whip, then you get disqualified. But this is not that. This is under the concept of voluntarily resigning your membership. Now, so the Supreme Court seems to be caught here right now between saying yes, there is a technical jurisdiction issue that the High Court can't look at this, and they've agreed that that is the case. But at the same time, they're being influenced by this question of saying कि democracy की issue है, उनको dissent के लिए they must have the right. If they don't have it, then it's not fair. So the court is stuck in this very strange place right now. So even while Sibal, they've accepted his argument on the fact that the Kyoto Holohan judgment requires this question to be asked, they're also accepting almost on merits what the Sachin pilot camp is saying. Or at the very least, they're letting that influence how they want this to proceed. इसको राजनीतिक तरीके से आदित्य और वकाशा अगर देखें तो आदित्य पिछले एक हफ्ते में बहुत कुछ हो चुका है, क्योंकि पिछले शुक्रवार की अगर हम बात करें तो चीजें काफी तनावग्रस्त हो चुकी थी अशोक गहलोत कैंप और सचिन पायलट कैंप के बीच। अब पिछले एक हफ्ते में काफी कुछ हो चुका है, काफी सारी बातें कही जा चुकी हैं। अगर अशोक गहलोत के 2 दिन पहले के बयान को ले लें तो उन्होंने काफी कटु शब्दों में सचिन पायलट का तिरस्कार किया हुआ है, वहां पर कहते हुए कि ये निकम्मा है, ये नकारा है, ये तो 6 महीनों से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश में लगा हुआ था। ऐसे में जो हम पिछले हफ्ते तक एक उम्मीद भी रख रहे थे कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट के कैंप को पैसिफाई करके एक वापस लाने की कोशिश की जाएगी, अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जा रही हैं, जिस तरह के बयान गहलोत कैंप की तरफ से आ रहे हैं, उस तरह से आपको क्या लगता है एक रिकंसिलिएशन का, एक पुनः मिलाप का जो एक थियोरी या जो एक उम्मीद सब लगाए बैठे थे, क्या वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? अब देखिए, जब एक तरफ से गहलोत की तरफ से अगर देखें हम, तो वो कह रहे हैं कि उनके पास ऑडियो मौजूद है सचिन पायलट की बीजेपी के साथ बातचीत के, और सचिन पायलट से जुड़े हुए विधायकों की बीजेपी के साथ जो डील चल रही थी उसके ऑडियो गहलोत के पास मौजूद है। ये उनका एलिगेशन है। तो अगर उनकी तरफ से देखा जाए तो ये तो सरासर गद्दारी है। तो
दूसरी तरफ अगर सचिन पायलट की तरफ से देखा जाए कि भाई आप जिस मुख्यमंत्री के अंडर काम कर रहे हैं वो आप ही को निकम्मा नकारा बता रही है, तो वैसी सरकार में कैसे रहा जा सके। तो अगर हम इन दोनों के तरफ से देखें तो एक रिकंसिलिएशन का स्पेस बहुत कम हो जाता है। लेकिन अब रिकंसिलिएशन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। अगर कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप चाहे तो सचिन पायलट को सेंटर में ला सकती है, बशर्ते कि जो गहलोत की का एलिगेशन है कि सचिन पायलट की बीजेपी से डील है, वो एलिगेशन गलत है। तो अगर मान लीजिए वो एलिगेशन गलत है तो सचिन पायलट को फिर भी दिल्ली में या कहीं अकोमोडेट किया जा सकता है। लेकिन अगर वो एलिगेशन सही है तो फिर कोई स्कोप ही नहीं बचता सचिन पायलट को कांग्रेस में रोकने का। मैं असल में वकाशा से एक सवाल पूछना चाह रहा था कि ये एक एन एलिगेशन वाज मेड दैट द फैक्ट दैट Mukul Rohatgi and Harish Salve, these lawyers represented Sachin Pilot's case in the Supreme Court. Many people have insinuated that given that these lawyers have been seen to be close to the BJP, it indicates that there is a deal between the two. How far is that correct? And another question I had is that if you look at Karnataka and Madhya Pradesh, they adopted a resignation route to bring down the government. The MLAs started resigning one by one, and that's how the government fell. On the other hand, Sachin Pilot hasn't chosen that route. So does that indicate that his intention wasn't to bring down the government in the first place, unlike Karnataka and Madhya Pradesh? So to answer the first question, अगर हम देख रहे हैं कि हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, अब पॉइंट ये कि देखो मुकुल रोहतगी फॉर्मर अटॉर्नी जनरल था, he had been appointed by the BJP government. He didn't accept an extension of his tenure, and now he's been practicing privately. Now, at the same time, I think it's a dangerous thing to go down this route, because number one, you should never be looking at saying that a lawyer is part of their client. That sometimes, now for instance, say you have Abhishek Manu Singhvi, who's a spokesperson and will represent Congress, that's one thing. Or if say if Arun Jaitley had ever gone to court and argued on behalf of the BJP, then that's a different matter. But when what you've got here is Mukul Rohotgi is now one of the experts in India on this issue. He has represented, in fact, he has even represented Congress and other and non-BJP MLAs in these kind of cases in different parts of the country. So I think when it comes to Rohotgi, it's absolutely incorrect to, I think, use that, because as I said, he and Singhvi are currently the two lawyers who have done the maximum number of these cases. तो अगर आप बोलोगे कि तो अगर सिंघवी नहीं represent कर सकता है आपको, तो फिर मुकुल रोहतगी is your best option. So obviously, so there's absolutely no way you can say that going to Rohitgi shows a BJP connection. Harish Salve is a little more interesting because he has less of an official connection, you could say, with the BJP. But of late, he has had so this is not an area which he's normally argued before. He's one of India's best, foremost constitutional experts, but he's not often argued this kind of case before. So you can ask a few more questions if you want, but again, you will always come back to the issue of that a lawyer is not representative of who their client is. Like you cannot, and doing that is dangerous, because then you start reaching a position where you'll start saying that, the moment someone that you're going to end up denying people representation. So that's quite that's a dangerous route to go down. And at the end of the day, these are two of India's most respected, reputed senior advocates. To go into that, I think, is a very and it detracts from what the issue is here. Because as you said, the question we have to look at now is what are the real intentions. Who he's picked as his lawyer doesn't answer that. अगर आप जैसे resignations की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे मेरे suspicion में issue ये है कि उन्होंने अब तक resign नहीं किया, क्योंकि अभी तक जो सचिन पायलट है उसके पास enough MLAs नहीं है कि अगर वो resign कर ले फिर गहलोत government topple हो जाएगा. Because if you take now all of these MLAs out of the equation right now, it's still leaving Gehlot with a majority in the assembly, and that's not even in terms of saying that okay, now because quorum has reduced, because if only 19 MLAs go, he still has over 100. So even if the assembly was full, 200 की assembly पूरी तरीके से सब elected है, तो फिर भी Gehlot has a majority. अगर आप मध्य प्रदेश और कर्नाटका को देखोगे, जब वो resignations हुए थे, it first took the party under the majority mark. If you count those resignations, वहाँ पे 20 MLAs जो थे MP में, जो 17 MLAs थे कर्नाटका, अगर उनको निकालोगे तो majority ही निकल जाएगा वहाँ पे. तो I think that is, if अगर हम politically देख रहे हैं, तो फिर उसका logic यही है कि legally you will still not lose your majority in the house.
even we're not even getting into a situation कि अच्छा इतने MLA reduce हो गए तो अभी भी. So I think ये काफी narrow margin था मध्य प्रदेश में कि जब ये resign हुए थे तभी भी, क्योंकि उसके बाद you don't count those many people as being part of the assembly. तो अगर 20 लोग resign हो गए तो फिर assembly strength 200 से 180 हो गया. It's not 200 anymore. So when you're counting majority, it won't be the same level. मध्य प्रदेश में वो बहुत क्लोज था, कर्नाटका में वो बहुत क्लोज था. यहाँ पे दोनों तरीके से simple majority and even agar quorum reduce karke there is no effect, there's going to be no benefit of resignation at this point. So now it's more of a thing of saying ki acha isko political issue bana de, courts mein bhi le jaye, ye sab ho jaye. It at least keeps them, it doesn't bring down the government. So from that political sense it makes no sense to for them to go the resignation route just now. वकाशा, आज के अगर कपिल सिब्बल के हम आर्ग्यूमेंट्स को देखें तो काफी टू एंड फ्रो हुआ था बेंच के बीच और कपिल सिब्बल के बीच. जब एक टू एंड फ्रो की हम बात करते हैं तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स स्पेसिफिकली स्टूड आउट वेयर द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड कपिल सिब्बल दैट ऑन what grounds have you disqualified the MLAs, on what grounds has the speaker disqualified the MLAs, to which Kapil Sibal said that the MLAs have been incommunicado, they have been hiding in a resort in Haryana, they have been speaking to news channels and demanding floor tests against their own government. So do you think constitutionally speaking these reasons weren't enough for the Supreme Court to believe the Ashok Gehlot side of the argument and say that yes, constitutionally the Supreme Courts are not allowed to, the courts of the country are not allowed to intervene in the functioning of the speaker or the assembly? So was it not a better option for the court to leave it on the Rajasthan High Court when it comes to the arguments specifically to MLA's behavior being given by Kapil Sibal? Were they not convincing enough for the bench today? So as I said, the thing is the court's caught in a confused situation, because while there was a lot of back and forth, and in fact, Justice Arun Mishra was saying, but you cannot shut down dissent in a democracy, you can't suppress dissent in a democracy. He said all of these things to Kapil Sibal, because that is the allegation, right, from the Sachin pilot camp, that we're not being allowed to express our views within the party. There's no rule that we can't dissent with the top party leadership, right? But the issue and the thing is this is what I said, this is what's very confusing about the Supreme Court decision, because they've acknowledged that what Sibal said, but they're at the same time agreeing with what, in a sense, with what the pilot camp are saying, by saying that look, this still has to be taken up, it is a matter of democracy. Now this comes down to paragraph 2(1)(a) of the 10th schedule. That says that that MLAs can be disqualified if they've voluntarily given up membership of their party. So a Congress MLA voluntarily decides to resign from the Congress, he gets disqualified automatically as an MLA as well. It's not just one or the other. Now, what the thing is, of course, that voluntarily giving up membership is a broad thing. वो यही नहीं है कि अच्छा मैंने पेपर पे लिख लिया कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ. You don't. It's not just that. You have to also. You look at all sorts of factors. You look at conduct. You look at all of these things, and that's what the speaker is doing. He's saying we gave you notices saying this is urgent party meeting. उन्होंने नोटिस में ये भी लिखा था, इनफैक्ट अगर आप देखोगे सेकंड नोटिस में उन्होंने ये भी लिखा था कि अगर आप अटेंड नहीं करोगे तो हम ये मान लेंगे कि तुम पार्टी को छोड़ रहे हो और तुम पार्टी के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जा रहे हो. तो the speaker is quite, the Congress camp is quite justified here. It's saying that this conduct therefore amounts to voluntarily giving up membership. But at the same time, what you don't want is a situation where people don't have a chance to express any dissent in a party. Then there's no point of having a parliamentary party. Then you just have whoever's at the top. So there is a conflicting issue here. And I think the court has just got caught between it. I think the ideal thing would have been to either stay would have been, you know what, this is so important, let's stay the Rajasthan High Court proceedings and then take a call on this next week. That would have been the best thing to do if you were not convinced by Sibal's argument. But at the same time, you're saying that we are convinced that there is an issue here, but at the same time, you're also saying that we're not going to. So I mean, I think the court hasn't made a decision on whether they agree with Sibal or not. I think that's what so चाहे जितना भी कोर्ट में जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो, अभी तक उन्होंने प्री-डिसाइड तो नहीं किया है. But it's a decision which doesn't seem to have a lot of legal precedent behind it, or make a lot of sense from a practical point of view when you're looking at it. Absolutely, and one of the biggest takeaways from today's hearing is that the court saying that dissent in a democracy cannot be shut.
Now, when it comes to dissent, Kapil Sibal also argued that the dissent was against the party, and the MLAs were given enough time, enough notice to sort of raise their issues on the party platform so that things do not keep spiraling down. That was Kapil Sibal's argument. पर अब जब हम पार्टी की बात करते हैं आदित्य, क्या कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप एक तरह से आपको सही नजर आती है इस मुद्दे में? क्योंकि जिन दो नोटिस की हम बात करें, पहली मीटिंग से पहले नोटिस दी गई थी कि आप हाजिर हो, पब्लिकली ये बयान दिए जा रहे थे नेशनल स्पोक्स पर्सन की तरफ से कि हम चाहते हैं कि सचिन पायलट और उनके समर्थक सामने आए, अपने इश्यूज रखें। दूसरी नोटिस में भी ये बात रखी गई थी, मीटिंग के बाद बयान भी आए थे कि हम सचिन पायलट और कैंप से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सामने आए और अपने इश्यूज रखें। और यही मुद्दे आज कपिल सिब्बल के लिए एक काफी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बनकर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं, जिस पर ये कहा गया है कि MLAs are elected representatives of the people, so they have a right to dissent. But Kapil Sibal said that they were given enough chances to raise their issues on the party platform. They were also asked to come forward and talk to us publicly multiple times. Then what happened? Does the Congress central leadership over here has a higher standing when it comes to the arguments being made by the Sachin Pilot camp? See, I think the Congress central leadership hasn't really done too many wrong things in this entire episode. They've been quite cautious in whatever statements they have made. They have been cautious in saying that they have given Sachin Pilot a chance. They have been cautious in saying that okay, this person has not been treated unfairly in the party. And also by procedure, in terms of procedure, this document, the trail of documentation that the Congress central leadership is trying to create, saying, repeatedly telling the MLAs to come and discuss things in the party forum. Even जब सस्पेंड करने की बात आई तो सिर्फ उन्हीं दो MLAs को सस्पेंड किया गया जिनकी बीजेपी के साथ बातचीत का कोई सबूत सामने था, तो सिर्फ उन्हीं को सस्पेंड किया गया। बाकी जो 17 MLAs हैं जो बागी हुए हैं उनमें से किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। तो इसलिए कांग्रेस लीडरशिप ने काफी कॉशियसली इस मामले को हैंडल किया है। वो अभी भी सचिन पायलट के कैंप को एक मॉरल हाई ग्राउंड नहीं देना चाह रहे हैं। वो अभी भी यही बात जताना चाह रहे हैं कि ये बगावत पर उतर आए हैं, इन्होंने जाके दुश्मनों से हाथ मिलाए हैं, हमारे तरफ से कोई हमने इनके साथ कोई ऐसी ज्यादती करी नहीं है। So Congress central leadership has actually been careful. Now, I mean, the question one should ask the Congress central leadership is that was this entire row unavoidable? I mean, could they not have addressed this politically 6 months ago when they had a feeling that Sachin Pilot and Ashok Gehlot are not getting along? In one interview, Gehlot said that he hasn't spoken to Pilot in a year. इफ एक किसी राज्य में चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये एक गवर्नेंस का फेलियर बताता है, ये पॉलिटिकल फेलियर बताता है। इस चीज को सेंट्रल लीडरशिप ने नोटिस नहीं किया, ये सेंट्रल लीडरशिप का फेलियर है। तो बात यहाँ तक आ गई। ये जब सिंधिया चले गए थे तो इन्हें अंदाजा हो जाना चाहिए था कि पायलट भी जाने के कगार पे होंगे, तो तब इस मामले को एड्रेस क्यों नहीं किया गया? ये सारी चीजें ज्यादा लाजमी क्रिटिसिज्म है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन प्रोसीजरली मेरे ख्याल है कांग्रेस पार्टी ने कोई बहुत ज्यादा इसमें गलती नहीं करी है। प्रोसीजरली कांग्रेस पार्टी काफी एक स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर्स फॉलो करती हुई नजर आई है, लेकिन इंटरपर्सनल लेवल पर एक सचिन पायलट को पैसिफाई करने की अगर हम बात करें तो वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप इस बार ही नहीं हमेशा की तरह नाकामयाब होती हुई नजर आई है। पार्टी प्रोसीजर्स की बात करें तो नोटिस भेजे गए थे, उन्हें पब्लिकली अपने इश्यूज पार्टी फोरम पर रेज करने के लिए मौके दिए गए थे, और यही सारे आर्ग्यूमेंट्स आज कपिल सिब्बल ने अशोक गहलोत की सरकार और राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हुए कहा। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों के लिए ही फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों को ही एक वक्त कुछ हद तक मिल सकता है, क्योंकि और इसी आदेश के चलते कल की जो एक वर्डिक्ट राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से आनी है वो कुछ हद तक रिडंडेंट हो जाती है, क्योंकि
that is anyway subject to be challenged by the in the Supreme Court in the hearings that are slated to begin from the 27th of July. What is the way forward for Sachin Pilot and Ashok Gehlot camps and the Congress center leadership as such? That remains to be seen, because now the ball is in the Supreme Court's court. How is that going to work, and whose favor it is going to work in? Is the Supreme Court going to critically scrutinize the Speaker's notices of disqualification? Is it going to go into the matter of the constitutional validity of the Speaker's actions? Is it going to give the verdict in the favor of the Speaker when it comes to the constitutionality of his orders, or is it going to go against the Gehlot government and favor Sachin Pilot? Those things remain to be seen, because the Supreme Court has made it clear that the matter is not just about the falling of the government. The matter is about dissent in a democracy. The matter is about representation of publicly elected MLAs, and it is going to shed a light on the entire system and the functioning of the governance, not just in Rajasthan, but it might be able to set a precedent for when it comes to incidents like these in the future. So how is it going to go? Those updates we are going to continuously track on the Quint and Quint Hindi's website, and also on the Quint's Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, and the Quint and Quint Hindi website, of course. So for now, I thank Aditya and Vakasha for their insights on the matter, but we are getting you all the updates on the Quint, minute by minute analysis, live updates, and all the happenings in the state of Rajasthan. Will the Ashok Gehlot government fall, or will Sachin Pilot be able to sustain himself within the party, considering the kind of arguments that and the statements that are being made by the Congress party and Ashok Gehlot himself in the last 2 weeks? Till then, stay tuned to the Quint. Thank you. Namaskar.